Sorry for keeping you guys for so long. मतलब कोशिश तो ये थी कि टाइम पे शुरू करें. सबको कोशिश मेरी. So I'll introduce myself a bit first. My name is Sadal Lawala. I run a startup Grind in Karachi. I also work with Rehan Foundation, which is run by my dad, Rehan Lawala. And we have a few other things that are happening. Today's theme is Future Fest is happening in Lahore at the end of this month. So I'm going to be there. I want more people to be there. I'm really excited to see a lot of faces that are there. Then we have a presentation of Future Fest. I'm just going to tell you briefly about Startup Grind. Startup Grind globally सबसे बड़ी community है startups की. 600 शहरों में exist करते हैं. हर शहर में हर महीने events होते हैं और हम community को मिलाने की कोशिश करते हैं. I'm trying to make that happen more and more in Karachi. So this is our second event in a month, and we're trying to do even more. तो उसमें किसी तरह हम आपकी help कर सकें या हमारी help कर सकें, please. I would love for support and to give support and to get support. अब मैं थोड़ा सा अगर फ्यूचर फेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं उमर भाई के साथ, and then we can move forward. Thank you. Thanks for coming again, please. Thank you. So my name is Omar and I'm the project manager for Pakistan Innovation Roadshow. It's a part of the Future Fest, which is Pakistan's largest technology conference. और पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो हम लोगों ने जीबी से स्टार्ट किया. मकसद ये था कि हम मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके वहाँ उनके साथ वो अपॉर्चुनिटीज शेयर कर लें जो कि एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है और इंटरनेट का एक्सेस हर किसी के पास है. सो जो अपॉर्चुनिटीज कराची लोगों के पास है वो सवाद के साथ भी है और वो जीबी का एक बंदा है उसके पास भी है. हर सिटी में हम लोग नॉर्मली 3 एक्टिविटीज करते हैं. द फर्स्ट इज द कॉन्फ्रेंस जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग कराते हैं. द सेकंड इज द इंडस्ट्री राउंड टेबल, वो हम लोग चैम्बर्स के साथ मिलकर कराते हैं. And the third is the tech community meetup. This is also a tech community meetup. Thanks to Saad for his amazing support और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए. इंडस्ट्री राउंड टेबल का हमारा मकसद ये होता है कि हर इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर, हर सिटी के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी होते हैं. उसको डॉक्यूमेंट करना, फिर नेशनल लेवल के ऊपर ये हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे कि वो नेशनल पॉलिसीज वगैरह बनाती है ताकि वो रिकमेंडेशन उनके पास हो. सो विदाउट फर्दर ड्यू आई वुड लाइक कि हमें फ्यूचर फेस्ट जो 2023 में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था उसके हाईलाइट्स में प्ले करूँ. इस इवेंट में सितारे हैं अभी भी हम जागे हैं करके हवा में हम नीचे दिल करे जो करूँ सारी दुनिया से लड़ूं ये सब जो बिगड़े हैं मेरी ही गली है खुद से लड़ूं तेरे गिरवा कैसे ना ये हौसले बुलंद है मेरी अपनी कहानी किसी की ज़बानी में कहता नहीं पकड़ है पीछे देखे नामुमकिन है आगे पीछे जो विनिंग है मेरी पहली ये तो संजीत को पकड़ूं हम जिन्हें हम बढ़ेंगे ज़माने से लड़ेंगे इन नस्लों में लुट के हम अपनी डेस्टिनी अपनों से जोड़ेंगे. पीछे मुड़ के मैं देखूं मेरी फाइट पीछे देखते बैठे अपनों पर की राइट पीछे जाते जाते अपनों पर की फाइट वो सीना चला मेरा दिल You are the boss, ये अंदर तुझे लगा फुट थोड़ा और फ्यूचर का से टक्कर हम तेरे ऊपर उलट तो लगता मुझे नहीं मुझे तेरी शैप में दिखे जैसे लूना सोच से ऊपर भी फास्ट करने कुछ लाहौर on the map. It's time for a rap and street ball like din size vaccine scenes on a set mic check with the boss complex जब भी उगे तो wanna turn the heat on just like the sheet on अपने mind की strings और अपने rhyme की scheme और कैसे करे compete on चले लगा रहा देखे ना high कभी सोचे ना violent this speaker fire जो तेरी desire setting melody high बाकी first to die on mic we fire तो कभी कहते नहीं rest hit करें mainstream like with the best believe in yourself and believe in the best willing to learn killing the death selling the future 2023 taking over the scene come have a seat running on this movie live like a seed it up they all but you can see degrading no I don't mean
एक और वीडियो है आतिश आजम की, अमेरिकन एम्बेसी ने उसको पब्लिश किया हुआ था 4 साल पहले, हमारी कहानी के नाम से। My name is Azish Azam. I am the founder and CEO of Ijad Labs, a collaborative innovation hub for South Asian entrepreneurs. A lot of our focus is on connecting people who have talent and resources. I think there's a lot of entrepreneurial energy in Pakistan. We see a lot of young people building these companies. The culture of Pakistan, which believes in the methodology of Jugaad, right, which is essentially finding cheap solutions to problems in their life. Right? Startup Aid essentially builds startup ecosystems in more than 500 cities around the world and more than 125 countries. So we host monthly fireside chat events which focus on promoting local entrepreneurs, investors, and tech. So the biggest challenge right now is access to funding and especially early stage investment for Pakistani companies which are focused on Pakistani markets. I believe all of us are meant to be entrepreneurs, even if they're doing a job or working for someone else. The entrepreneurial spirit needs to be there to innovate. So whenever you experiment, you fail, right? And that's the only way to learn. Thank you so much. This was the Future Fest highlight. Within this single conference, $200 million are invested in Pakistan through different MOUs and partnerships. So thank you so much. We are already running out of time, so hand over to sir. Thank you. अच्छा, अब जो है I would like to invite Hassan Syed, who is the founder at Aspire Pakistan. थोड़ी सी तेज हो गई बस, सही. He's an amazing person and doing a lot of work with a lot of institutions and all kinds of institutions, and बहुत ज़्यादा काम जो अब startups में especially दिखता है हमें, that is his work. So thank you so much for being here. Thank you, Saad. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. आप सब लोग काफी देर से बैठे हुए यहाँ पर, मैं देख रहा था और इंतजार कर रहे थे, और मैं कह रहा था कि यार एटलीस्ट कोई कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया कहते हैं. मेरा ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है. 37 years ago I started my technology journey from Pakistan. I started a job over here in Hyderabad, which is a small city near Karachi. आप सब लोग जब किसी को मैं हैदराबाद कहता हूँ कहते हैं अच्छा आप कराची में रहते हैं. नहीं, हैदराबाद दूसरा शहर है. नहीं, कराची ही हुआ ना तकरीबन. So it's like that. Anyways, I left Pakistan in 1990, worked in 22 countries. तकरीबन मैंने 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिनको मैं छोटे स्केल से ग्लोबल स्केल तक लेके गया. 2019 ये I am cutting the story short. जाहिर है पूरी जिंदगी की स्टोरी है and I don't need to bore you with that. 2019 में I decided that it's enough. मेरे बच्चे बड़े हो गए and I have to do something for my country. And this is the time, क्योंकि उसके बाद बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मेरे पास इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगी. So this is the right time to do it. So 2019 I came to Pakistan. And in Pakistan, I first ended up in the Prime Minister office, and I tried to convey and convince them to have focus on startups, and that led to Kamyab Jawan Startup Pakistan program, which I designed originally with the Prime Minister office. But Alhamdulillah, within like 6 months, I realized कि ये उनके बस की बात नहीं है, और मेरे ख्याल में मैं गलत जगह के ऊपर आ गया हूँ. एंड अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी वो समझ दे दी कि मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स फिगर आउट समथिंग एल्स. सो व्हाट आई डिड, जो हर कोई करता है, जो उसके करीब लोग होते हैं, तो मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू कर दी. मैंने कहा उस वक्त तक कि 20,000 बच्चे स्टार्टअप पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुके थे. तो मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थी कि भाई ये 20,000 बच्चे तो मेरे कहने के ऊपर आ गए, लेकिन आगे गवर्नमेंट का कुछ प्लान नहीं है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम व्हाटएवर दे वर प्रॉमिसिंग. So I was really stressed and I was losing my sleep, and I said, okay, what I can do is in all that, difficult time is to reach out to my friends and say, look guys, maybe we can do something small, not at the level of the government, not at the level that they were talking about, but something, reasonable. So we collected like 80 friends. Anwar, who is here, he's one of the early friends who joined. तो 80 के करीब हम दोस्त मिले. हमने कहा यार, हम तो लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स की नहीं बात कर सकते. What we would like to do is by 2023 we would have 100 startups supported by us. So that was a very small. In 2021
we set up this goal and we said, okay, let's start. Alhamdulillah, today, just past December 31st, 2023, I think that we have supported over 400 startups in the last 2 years, Alhamdulillah. ये जर्नी जो था, इस जर्नी के अंदर हर स्टेज के ऊपर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आता गया, लेकिन it was the entrepreneurial spirit that led me and all my friends to continue this journey to this point. During this time, we started National Idea Bank, which is Pakistan's largest now innovation ideas competition. Actually, as of now, as we are speaking, we are having our provincial announcements for 2023. और मेरे ख्याल में तकरीबन 3,800 आइडियाज लास्ट ईयर थे, 2,100 आइडियाज पिछले साल थे उससे, और 2,400 आइडियाज एंट्रीज जो हैं वो इस साल थी. सो वी हैव प्रोसेस अ लॉट थ्रू व्हाट यू कॉल इंडिपेंडेंट जजेस, जो इन लोगों को जज करते हैं और आगे इन आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं. फिर अनवर खान ने हिम्मत पकड़ी, इन्होंने कहा मैं भी कुछ करूं, तो इन्होंने पाक एंजल्स के नाम से स्टार्ट किया. पाक एंजल्स जो है वो पाकिस्तान का पहला एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क है जो अर्ली स्टेज के ऊपर आइडियाज के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करता है. ये सारा जर्नी जैसे जैसे चलता गया, जैसे कहते हैं मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगन, लोग मिलते गए और रास्ता बनता गया. एक हमारी स्टार्टअप यहाँ पे बैठी हुई है, सदफ सुपर वुमेन, तो इनको तो मैं वैसे ही सुपर वुमेन कहता हूँ, ये खुद ही सुपर वुमेन है. तो और भी इस तरह स्टार्टअप्स हैं हर जगह के ऊपर. लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आज आप लोगों के साथ कन्वे करना चाह रहा था इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये स्टोरी सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे, सो यू नो फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, ओके, सो नथिंग एल्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड माय बैकग्राउंड एंड दैट्स अबाउट इट. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर आपके साथ शेयर करूंगा और उसको हमारे दोस्त आजम मलिक आ गए तो उनके साथ कनेक्ट करूंगा कि वही है साहिबे इमरोज कि जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला गौहरे पर्दा. समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं. आज के दिन का द किंग ऑफ टुडे, आज के दिन का मालिक वो शख्स है जिसने अपनी हिम्मत से वक्त के समंदर से आने वाले कल का मोती निकाला. आने वाले कल का मोती इस फ्यूचर फेस्ट. दुनिया भर से टेक्नोलॉजी की कंपनीज आ रही हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अगर आ सकते हैं तो आप लोग आए फ्यूचर फेस्ट में ज्वाइन करें, नहीं आ सकते हैं तो इस आवाज को आगे बढ़ाएं. सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच साद फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. शायद एक आध मिनट ऊपर हो गया, बस थैंक यू. आपने इतनी अच्छी बात कही, आप ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा हो गया था वैसे, लेकिन आपके लिए सब एक्सेप्टेड था. I think we're going to start our panel now. The panel that we're doing today, is partnered with Indulge. So Indulge is our partner for that, and Saad Jamra is moderating it. So I would really ask that आप stage पे आ जाए इसके लिए. With that, we have a lot of great speakers, but I would want Saad bhai to introduce them and. Thank you, Saad, for inviting me. So today we will be discussing about food technology, food trends, restaurant industry. Restaurant industry जो है पाकिस्तान की one of the largest industry है, जो कि almost 6% का इसका शेयर है पाकिस्तान की GDP का, और almost 4 million के करीब direct employments ये industry provide करती है, और couple of millions of people indirectly इस industry से connected. One of the largest and one of the growing industry है, जिस potential पे अभी खड़ी है, इस अभी भी काफी gap है, और there is large potential for newcomers and जो current players हैं. तो आज मेरे साथ जो है बहुत ही exciting लोग मौजूद हैं, जिनके साथ हम लोग इस industry के जो opportunities वो discuss करेंगे, challenges discuss करेंगे, और किस तरीके से हम सब इस industry से benefit ले सकते हैं. So without wasting any time, समद भाई मेरे साथ आ जाए, समद भाई, करीम भाई आ जाए, अनस भाई, सफीर भाई. So मेरा तो इंट्रोडक्शन दिया साद है, मेरा नाम साद है, मैं इंडल्ज
रेस्टोरेंट ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड POS सेटअप प्रोवाइड करते हैं, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। मेरे साथ जो बाकी पैनलिस्ट हैं, मैं माइक आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को introduce कराऊंगा। मेरा नाम अब्दुल समद है। मेरा ताल्लुक एक कंपनी लोकली ओन कंपनी है वाह ब्रांड्स। We operate about 8 brands in across Pakistan with over 50 outlets. ये थोड़ा सा तारीख था, 2003 से जो है मेरे ही अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो स्टार्ट करने का। It's a family owned business. मेरा नाम करीम है। 2015 में मैंने अपने पार्टनर्स के साथ bogo.p के नाम की एक कंपनी स्टार्ट की। For those who don't know, Bogo is a demand generation platform which helps merchants to acquire new customers and retain those customers. Assalamualaikum, मेरा नाम अनस ज़बीदी है। I am one of the co-founders at Milk Brew Coffee. बड़ा recent brand है, we launched last year in October 22, and with the kind of overwhelming response that Karachi gave us, we're down with 5 branches. फूड में पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपोज टू फूड। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी से बैकग्राउंड है। आई यूज्ड टू वर्क फॉर कारफर्स्ट एज द कमर्शियल हेड एंड नाउ वी आर हियर टू कंप्लीटली ट्राई टू चेंज द कॉफी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। Assalamu alaikum ji. My name is Safirul Haq. I'm the CEO and founder of Indus Office Automation, and very recently we have taken over a brand, very old brand of Karachi, which is known as Chips. So as he said that हमारा भी technology industry से ताल्लुक है और technology background है, and very recent to food industry and food tech industry actually. Thank you. Thank you very much for the question. समन भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो एक ट्रेडिशनल वे में चली आ रही है और हम देख रहे हैं कि कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं, नए ब्रांड्स बहुत कम एक नेशनल लेवल पे जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स? फॉर एग्जांपल क्लाउड किचन है और साथ में हम लोग प्लांट बेस्ड मेन्यूज हैं। हम किस तरीके से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इनोवेशन किस तरीके से ला सकते हैं? Thank you very much. Very in-depth question. बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। I think जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उसको हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान itself is a market, एक नेचुरल मार्केट है with a 250 million odd population. तो हमारे ट्रेंड्स को समझने की ज़रूरत है, उनको डिजिटाइज होने की ज़रूरत है। अभी हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री डिजिटाइजेशन में भी बहुत पीछे है। So there are a lot of areas within the sector ourselves where our brands need to learn because traditionally जो market grow हुई थी वो basically supply gap की वजह से develop हो गई। लोगों ने availability नहीं थी, लोगों ने product लाए और दे दिया। Now the market has matured to a level where international brands came in, उन्होंने एक consumer culture को grow किया। Now it's competitive. So in competitive markets you have to build your competitive advantages. So जो brands अच्छा perform करते हैं, hence this is a very, so 80% of the restaurants die within the first 5 years. So it's highly competitive. तो इसलिए economics आपको पता है पाकिस्तान की वैसे ही challenging होती है। Hence digitization से आपको efficiencies पहले तो drive करनी है to build a scalable and sustainable brand. That's the first thing. जहाँ तक ट्रेंड्स की बात है, हमारे अपने जो ट्रेंड्स हैं, कंज्यूमर कल्चर, लोग अब अवेयर हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ी है, तो वहाँ से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, इनफैक्ट जस्ट रिसेंटली एक ट्रेंड आया था पाकिस्तान में कोई 3-4 साल पहले, फ्रोजन योगर्ट का। सो somebody in my network started a frozen yogurt brand just a few days ago and they're getting a very good response. So ये टैप करना चाहिए कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट में मिसिंग हैं, they can have a good opportunity to let's work it out with what is this Worship something जैसे आपने कहा कि 80% restaurants die within 5 years, within for the first 5 years. बिल्कुल ये एक रियलिटी है और आई थिंक इसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस मार्केटिंग है। रेस्टोरेंट एक ब्रांच खोल लेता है और बस वो समझता है कि अगर मैंने दुकान खोल ली है तो बस अब कस्टमर्स खुद ही आना शुरू हो जाएंगे,
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कम से कम करता है। आजकल यूजर जो हैं वो फ़ोन पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो करीब भाई मेरा आपसे सवाल है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए आप क्या समझते हैं कि एक ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके किस तरीके से कंसिस्टेंट और अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं? सो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो आई थिंक ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स को अगर देखा जाए तो 10 years बैक ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते थे, विच इज टीवी, प्रिंट मीडिया और ये सारी चीज़ें। लेकिन विद टाइम इंडिविजुअलिज्म बढ़ते जा रहा है इन पाकिस्तान एज वेल। सो माई सोशल मीडिया फीड वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आपकी जैसे सोशल मीडिया फीड होगी या समद भाई की सोशल मीडिया फीड होगी। तो अगर इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो उसको सिर्फ डिजिटल ई फोरफ्रंट से, डिजिटल ई चैनल से जो उसको सॉल्व करते हैं। सो फेसबुक फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम और द फूड एग्रीगेटर्स इटसेल्फ जो कि मेरे डेटा के बेसिस पे मुझे सजेशन करते हैं, दैट्स द ओनली वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तो जैसे कि जब हम रेस्टोरेंट्स के अगर P&L देख रहे होते हैं तो उसमें वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल जो कि एक सबसेट होता है वो मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक अवेयरनेस होती है, एंड देन देयर इज कस्टमर एक्विजिशन एंड देन रिटेंशन। तो आई थिंक फॉर द फ्यूचर digital channels such as Facebook or food aggregators would be the platforms that these merchants need to use in order to exploit कि मेरा कस्टमर कहाँ पर है और उसकी क्या हैबिट्स है। बोगो के केस में we only cater to those people who want to experience more or are smart spenders. So if you want a customer who is a smart spender, our platform is a very good tool in order to acquire and retain customers. इसी तरह अगर आप कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म देखते हैं, फूड पैंडा फॉर एग्जांपल, तो उसमें कन्वीनियंस इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। तो वहाँ पर आपको अपने कंज्यूमर्स ढूंढने होते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड एज वेल, आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी द वे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स एक्वायर और रिटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अनस भाई ये बताएं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पर ज़्यादा लोग देखे जा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली बिजनेस के तौर पर ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आपने इसके प्रोडक्ट्स बाहर से माशाल्लाह से स्टडीज करके आप पाकिस्तान वापस आए और आपने इसको एज ए स्टार्टअप लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, और टैलेंट की क्या, आप माशाल्लाह मल्टी चेन स्टोर्स पे जा रहे हैं, तो हाउ यू आर रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग द टैलेंट? सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज आया था इन एक्सपैंडिंग ऑफ कोर्स रिटेल ऑपरेशंस, वो कुछ इस तरह से था कि टैलेंट ऑफ कोर्स इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, स्पेशली वेयर एन इंडस्ट्री जिसके बारे में अभी तक किसी को ऐसा सच आइडिया है नहीं। कॉफी इज समथिंग व्हिच इज फेयरली न्यू, स्पेशली इन कराची। जनरेशन सी जो बिल्कुल रीसेंट बच्चे हैं फ्रॉम 18 to 24, 25, 26 years old, उनमें वी ट्राइंग टू डेवलप एंड ट्राइंग टू क्या कहते हैं, एक तरह से उनके अंदर हम लोग ये सेंस डेवलप करना चाह रहे हैं कि कॉफ़ी इज़ द वे फॉरवर्ड, बिकॉज चाय और कॉफ़ी दो ऐसी चीज़ें जो पीपल डू कंज्यूम। हमारे लिए एक मेजर मसला एक और जो आता है वो ये आता है कि टेक्नोलॉजी को अगर मैं इसमें थोड़ा सा लेकर आना चाहूँ तो विच इज़ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करना। सो यूजुअली क्या चैलेंज आते थे कि रेस्टोरेंट्स की जब एक्सपेंशन होती थी, या जिस तरह आपने बोला कि फैमिली और बिजनेस को आगे लेके जा रहे थे, हमारे लिए दिस वाज समथिंग वेरी न्यू, और इसमें एक स्टैंडर्ड को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो स्टैंडर्ड को ही मेंटेन करने के लिए हमारी कोशिश ये कि हम लोग एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स बनाएं फॉर एवरी इंडिविजुअल। जहाँ तक बात रही टैलेंट की, तो टैलेंट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू नर्चर आवरसेल्व्स एट द मोमेंट। वी ट्राइंग टू हायर अर्ली टू मिड एज्ड इंडिविजुअल्स जिनको हम खुद एक थॉरो ट्रेनिंग प्रोसीजर से लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए मेन काम है वी शुड हैव अ बरिस्टा इन एवरी कॉफी शॉप। देयर इज अ बरिस्टा, जैसे रेस्टोरेंट्स में शेफ्स होते हैं, हमारे पास बरिस्टास होते हैं। बरिस्टास कराची में है नहीं, दे आर वेरी रेयर, सो दैट डेवलपमेंट ऑफ कोर्स आल्सो रिक्वायर्स टाइम, एंड रिटेंशन अभी एक चैलेंज हमारे लिए है, एम्प्लॉय रिटेंशन खासकर। जहाँ तक बात रही
कस्टमर्स को कन्वर्ट करके अपनी तरफ लाने की, तो यस, डिजिटलाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड एज वेल. आई वुड लाइक टू आल्सो agree with what Kareem just said कि हाँ, डिजिटलाइजेशन हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि हमारी जितनी भी टारगेटिंग है टुवर्ड्स ऑडियंसेस is done through technology, is done through platforms like Facebook, Instagram by the way is a great converter. Google Ads, we are still trying to see how that works around for us. But yes, nurturing and schooling and educating our own employees and making sure that they are our future managers, future leaders, जो कि हमारे ब्रांड को आगे ले जा सकें. I think that's the only way forward for us. Thank you very much, Abel. सफीर भाई, ये बताएं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हम पिछले 10 साल से 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि वो एक ब्रांड है और एक ब्रांच है और वो एक ही साहब हैं और वो काउंटर पे बैठे हुए हैं और उस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, वो खुश भी हैं, बट वो 20 साल हो गए, वो एक ही ब्रांड, एक ही ब्रांच है. तो आपको क्या लगता है कि दो चीज़ें इसमें, एक तो किस तरीके से हम एक रेस्टोरेंट को ग्रो करा सकते हैं, दूसरा ये माइंडसेट जो रेस्टोरेंट ओनर के हैं ट्रेडिशनली कि अगर मेरी एक ब्रांच है और वो अच्छी चल रही है और मैं उसमें खुश हूँ तो ये कब तक रहेगा. ऑफ कोर्स चेंज तो चाहिए, बट ये ट्रेंड इसको इस माइंडसेट से कैसे बाहर आएगा. थैंक यू साद भाई. अच्छा, नंबर 1 चीज जो मुझे नजर आती है वो ये कि हम सिस्टम्स पे काम नहीं करते. ग्रोथ के लिए ना सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है. अगर आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रांड, बाहर की ब्रांड्स की कॉपी खुलते हैं. शेक शैक की कॉपी होगी, न्यूयॉर्क फ्राइज की कॉपी होगी, बहुत सारे ब्रांड्स की आपको कॉपी मिलेगी. बट जो कॉपी करना चाहिए एक्चुअल, वो उनका सिस्टम है, जिसकी वजह से 50,000 ब्रांचेस सबवे की हैं, लाख ब्रांचें मैकडॉनल्ड्स की हैं. हम कभी भी सिस्टम पे काम नहीं करते. ग्रोथ हमेशा सिस्टम से आएगी. और अगर आप देखें तो क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ की तरफ जाते ही नहीं, इसी वजह से हम टेरिटोरियल बेस के अंदर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. किसी एक रीजन में, किसी एक जगह पे हम फंस जाते हैं और वो हम इवन लोकली ग्रो नहीं कर पाते. जो पहला बर्गर ब्रांड था पाकिस्तान का, जो कराची से स्टार्ट हुआ, वो आज तक हैदराबाद नहीं जा सका. तो हमारी यहाँ ग्रोथ इसी वजह से नहीं आती कि हम फैमिली बिजनेस के अंदर फंसे हुए होते हैं, फैमिली राइवलरीज के अंदर फंसे हुए होते हैं. हम सिस्टम्स नहीं बनाते जो एक्चुअल ग्रोथ लेके जाए. और मैं नहीं समझता कि हमारे चंद एक ब्रांड्स हैं जो ग्लोबल गए हैं. फॉर एग्जांपल बारबेक्यू टुनाइट, लाल किला, ये ग्लोबल अवेलेबल है. बट देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो बाहर आप जाते हैं तो वहाँ वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो टेस्ट नहीं है. जिनके अंदर पोटेंशियल है वो ग्लोबल ब्रांड्स बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिस्टम ना होने की वजह से वो ग्लोबल नहीं बन पाते. मेरा सवाल जो आपसे है, यही इसी सवाल को मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि अब ग्लोबल जाएं कैसे. अगर कुछ ब्रांड्स हमारे ग्लोबल गए भी हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बिरयानी, बारबेक्यू टुनाइट, वो भी मेनली एज अ फैमिली बिजनेस के तौर पे ही गए और पाकिस्तानी ऑडियंस को ही टारगेट करते हुए गए. लेकिन असल जो ये है कि हम ग्लोबल मार्केट को अगर हमें टारगेट करना चाहिए और किसी पाकिस्तान ब्रांड को जाना चाहिए, तो वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, आइदर वो फास्ट फूड हो या जनरलाइज रेस्टोरेंट हो, और क्या टिप्स हैं कि ना सिर्फ ग्लोबल बल्कि हम कराची से कैसे बाहर जाएं और एटलीस्ट नेशनल लेवल पे पाकिस्तान का कोई भी एक ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि 100+ ब्रांचेस हो उसकी. इंडिया में टन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो 500+ ब्रांचेस के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, सऊदीया में, यूएई में. पाकिस्तान में एक नॉट अ सिंगल रेस्टोरेंट. आपको क्या लगता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं इस फार्मूले में? बीइंग एन ऑपरेटर, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि मेरे बायसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम चैलेंजेस फेस करते हैं डे इन डे आउट और हम अपने बारे में भी सोचते हैं कि हम क्यों इंटरनेशनल नहीं जा पाए, या हम हैं इंटरनेशनल कुछ मार्केट्स में, बट वी हैवंट बीन एबल टू स्केल लाइक अदर इंटरनेशनल ब्रांड्स. तो मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रखूँगा. एंड सफीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की. तो पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट ऑन सिस्टम्स. ये तो एसेंशियल है ना, इवन ग्रोथ इन पाकिस्तान के लिए, कि हमारे सिस्टम्स, चाहे वो हमारे कंप्लायंस सिस्टम्स हों या हमारे लीगल स्ट्रक्चर्स हों, उस तरीके से वो फैमिली बिजनेस से बाहर आए. तो ओनरशिप एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा नहीं पाते कि हम एक्सटर्नल कैपिटल दे सकें और देन वी कैन ग्रो. तो पहले तो हमें उन सिस्टम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है. फिर मैंने पहले बात की डिजिटाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कम्पिटिटिव एरिया हो गया, मार्जिन बहुत श्रिंक हो गए हैं. पोस्ट एग्रीगेटर, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, द मार्जिन आर थिन
and manual processes से उसको आप you cannot even see them, right? So you have to digitize immediately on war footing basis. तो बहुत सारे हर ब्रांड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं बढ़ी है. आप जैसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं उन्होंने बहुत अवेयरनेस दी है, डैशबोर्ड्स दिए हैं, तो अब लोग देख सकते हैं, वो विजुअलाइजेशन आई है. नेक्स्ट लेवल जो है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत लोगों ने किया, विच इज ब्रांड बिल्डिंग. तो ब्रांड बिल्डिंग की अंडरस्टैंडिंग इस वक्त जो है ना, आई थिंक दैट नीड्स टू फर्दर ग्रो. वी आर कॉपीइंग ब्रांड्स, यू नो, हमारी ऑथेंटिक डेवलपमेंट मुझे ऐसा लगता है कि मिसिंग है. एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ आवर मार्केट, कि हमारी मार्केट चैलेंजिंग है, उसमें इकोनॉमिक्स फंस जाती है. हमारी मार्केट का जो कंज्यूमर है वो कुछ डिफरेंट डिमांड करता है. अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट बिल्डिंग उधर के कंज्यूमर के हिसाब से होगी. तो अब ब्रांड बिल्डिंग जो है ना वो लोकलाइज हो रही है. इवन इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो हर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते. जैसे KFC है, पाकिस्तानी मार्केट में बड़ा जबरदस्त ब्रांड है, बट you will find markets where they are not doing well. They are not doing well in the US. They are getting beaten up by competitors. Right? So it happens. But we need to constantly, I think brand building is something which we need to take it. But younger brands that are coming are doing a phenomenal job. And वो fundamentals माशाल्लाह हमारे साथ ही बैठे हुए हैं. मेल ग्रुप बनाया है, बड़ी शॉर्ट टाइमलाइन है लेकिन काफ़ी अच्छी सक्सेस है. कॉफ़ी कल्चर बन रहा है. And other brands as well in a lot of other spaces are coming in. Last point would be that मैं हमेशा से पाकिस्तानी cuisine का वो हूँ कि हमें अगर कोई चीज़ बाहर ले जानी है तो हमें पाकिस्तानी अपनी चीज़ को बाहर ले जाना है. So, you know, we should build our brands, right? Going into fast food and going international will be a more difficult pathway. Taking ours would be easier. करीम भाई ये बताएं कि एफिलिएट मार्केटिंग बोगो जो है, जो आप, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, और रेस्टोरेंट जो है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मार्केटिंग चैनल्स को, मोर एंड मोर मार्केटिंग चैनल्स को अडॉप्ट करें. पर साथ में कंज्यूमर का भी एक ये फियर होता है कि यार कि जो बाय वन गेट वन की जो डील्स हैं इसमें मुझे वही चीज़ मिलेगी जो रेगुलर डील्स की होती हैं. तो आप इसमें बोगो का क्या पार्ट होता है कि वो इंश्योर करता है कि वही क्वालिटी मेंटेन करे, वही बिहेवियर मेंटेन करे रेस्टोरेंट में? अच्छा, तो हमारे मॉडल में दो तरह की ऑफर्स कंज्यूमर्स को मिल रही होती है. एक बाय वन गेट वन ऑफर्स मिल रही होती है, एक डिस्काउंट ऑफर्स मिल रही होती है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेलग्रो हमारे साथ काम कर रहा है और he gets a buy one get one consumer and उसमें वो कॉफी शॉट शायद कम डाले या ज़्यादा डाले, ये कंज्यूमर्स को लगेगा कि ऐसा हो सकता है. तो पहले तो हम लोग रिगरस मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड. लेकिन सेकंड रीजन जिसकी वजह से मर्चेंट्स हमारे साथ काम करते हैं वो इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कस्टमर एक्वायर करना होता है. So our buy one get one offer gets locked as soon as a consumer has used it once. So Melbrew would sign up with us so that he gets a repeat consumer. So he'll make sure that his service level, his food level, his quality is maintained so that it becomes a regular consumer for Melbrew. तो इसकी वजह से जो merchants हमारे साथ काम कर रहे होते, the only reason why they work with us is to acquire more customers and retain them. तो अगर if they do not provide that quality, तो उनका ही नुकसान होगा because then customers won't be repeated and it won't be fruitful for them. तो ये प्राइमरी रीजन है कि मर्चेंट्स हमारे साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करते हैं. और अभी आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, जैसे समद भाई ने कहा, फूड कॉस्ट बिकॉज ऑफ फूड एग्रीगेटर्स and the operational expenses and the bottom line वो बहुत ज़्यादा हिट होने लग गई हैं. तो we have also become very flexible with the merchants in not restricting them to only give us a buy one get one offer, but a discount offer would do as well. We just want an incentive for a consumer ताकि वो कोई नई जगह ट्राई करे या उसका रेगुलर कस्टमर बन जाए. अगला सवाल मेरा जो है वो समद भाई आपसे और अनस भाई आपसे भी है कि देखिए, मार्केटिंग करके और इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके लोगों से एक दफा तो कस्टमर हमारे पास आ जाता है, बट द इशू इज हाउ टू
ensure the customer satisfaction and how to ensure the customer loyalty. आजकल इतना आपका कंपटीशन कॉफी शॉप से भी है और चाय की दुकानों से भी है और साथ में माशाल्लाह से पीटा जो आपका ब्रांड है, पिज़्ज़ा एक जनरलाइज ब्रांड है, हजारों पिज़्ज़ा शॉप्स खुले हुए हैं, हजारों जो शवारमा शॉप्स खुले हुए हैं, बट आप लोग माशाल्लाह से नेशनल लेवल पे हैं. बट द थिंग इज हाउ टू इंश्योर द कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. What are the key points to measure that and how you are ensuring that your customers are coming back to you again? Firstly, देखिए हम लोग when we started Melbourne Coffee, there were more brands, more coffee shops that were already providing coffee. हम लोगों ने जो एक चीज पे काम करा सबसे ज्यादा वो कर रहा था कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर. So from the time when you enter any of the Melbourne locations across Karachi, the scent is the same, the interior structure is the same. What we also try to do is make sure कि जो greeting and meeting है वो भी same रहे. So firstly we try to make sure कि customer experience is always spot on. Number two is the consistency. Since we at the back end know that we won't be compromising on our quality, we needed to ensure कि consistency of the coffee shops across Karachi, even morning shift to evening shift, में coffee same मिले. That is something that we also try to make sure कि वो रहे. तीसरी चीज है value addition. What value does a customer get by having Melbourne coffee? Is it just taste? Is it just the experience? Or is it something else maybe attached to your product? So we try to build such a complete brand in a way कि जिस तरह अभी बात करी brand building के ऊपर, तो brand building I think is also a very important part of making sure that the customer would want to come back. क्योंकि देखिए कॉफी और इवन अदर प्रोडक्ट्स तो हर जगह मिलती हैं, मगर आज मैं कॉफी पीऊँ या मैं कल कोई खाना खाऊँ versus परसों भी मैं वो सेम खाना खाऊँ, तो is the flavor the same? Is the experience the same? So that is I think a very key part के customer retain होके he'd like to come back, because first time around तो आप influencer marketing से या digital campaign से आप बुला सकते हो customer को. Second time is always a challenge, and I think that these are the key areas that we as a brand also make sure कि customer को मिले ताकि वो वापस मिल के हमारे पास आए. So जिस तरह अनस ने बात की, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और सिंगुलर ब्रांड से मल्टीपल ब्रांड. तो ब्रांड्स की कुछ अपने प्रॉमिसेस होते हैं, तो कस्टमर पहले तो वो एक्सपेक्ट करता है, तो जिस बेसिस पे आपकी मार्केटिंग हुई होती है या कम्युनिकेशन चल रही होती है, तो पहला तो वही बात आती है कि आप अपने प्रॉमिस को कैसे डिलीवर कर रहे हैं. एक्विजिशन जो है वो पोजिशनिंग से आ जाती है. आपकी अगर यूनिक पोजिशनिंग आपने क्रिएट की है ब्रांड की, तो उससे कस्टमर आ जाता है. बट रिकरिंग रेवेन्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिंगल टाइम रेवेन्यू आ जाएगा, दैट इज इजी. एंड हाउ डू यू क्रिएट दैट रिकरिंग रेवेन्यू एंड रिटेंशन? तो मैं फिर वापस उसी पे आऊँगा कि डेटा कैप्चर करना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे बिजनेस में कि कैसे हर कस्टमर का डेटा कैप्चर किया जाए. सो वी आर वर्किंग स्ट्रांगली ऑन दैट साइड कि every customer from any channel they're coming, we should be able to capture that, ताकि उसकी जो एक्सपीरियंस डिलीवरी है, चाहे वो उसका फीडबैक कैप्चर करने से हमें पता चले कि यार what is the percentage of customer that we are retaining. So this is what we are working on in our network, कि कस्टमर रिटेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो और जिस ब्रांड की जो प्रॉमिस है वो उस तरीके से डिलीवर हो. कुछ ब्रांड्स के लिए एक्सपीरियंस इज़ वेरी हाई, बट फॉर सम ब्रांड्स, जैसे आपने बोला कमोडिटाइज्ड ब्रांड है पिज़्ज़ा, सो वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे स्पीड ऑफ डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे product consistency goes hand in hand with these type of staple products. But for a restaurant like Tao or Xander's, for that the experience is much more important, because customer इतना heavy spending करता है इसलिए कि उसको experience चाहिए, वो अपने guest को ले जा रहा है या वो कोई special day पे जा रहा है. हम conclusion की तरफ जाएंगे. मेरा एक सवाल आप लोगों से आपसे कि देखिए कोविड के बाद जो सबसे बड़ी जो अफेक्टिव इंडस्ट्री थी, जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आई थिंक वाज द ओनली कंट्री जिसमें इस बिजनेस को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था 4 महीने तक. यूएस जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट था कोविड में, लेकिन एक दिन के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद नहीं हुई थी. टेक अवे एंड डिलीवरी चल रही थी, डाइनिंग बंद था.
पाकिस्तान में तीनों चीज़ें मिलती हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया डाइनिंग जो है वो टेक अवे डिलीवरी पे शिफ्ट हो और डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी डिपेंडेंट थी आज भी है थर्ड पार्टी डिलीवरी एप्स और उसकी वजह से जो रिसेंट जो इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी फूड कॉस्ट और जो हमारी जो यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ी है रेस्टोरेंट्स के लिए 30% अपनी सेल का परसेंटेज देने के बाद प्रॉफिट रहना बहुत मुश्किल काम होता है तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि थर्ड पार्टी डिलीवरी एप्स पे डिपेंडेंसी वर्सेस योर ओन वेबसाइट योर ओन एप्स रेस्टोरेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल का मसला है. सो some of our brands are heavily dependent on because our order ratio on aggregators is much higher and some brand to and on those brands we make it a point that we are spending heavily on our own channels. तो बहुत ज़रूरी हो गया है इस वक्त कि अपने चैनल्स को बिल्ड करना हर रेस्टोरेंटर के लिए. स्ट्रांगली एडवाइस कि भाई अपने चैनल्स डेफिनेटली एग्रीगेटर से आपके पास नंबर आते हैं बट वो नंबर्स जो हैं वो बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ आ रहे होते हैं. योर मार्जिन्स आर नॉट इनफ कि अगर सिर्फ उसी चैनल को देखेंगे तो आप योर बिजनेस माइट इज एट रिस्क. तो आप अपने प्लेटफॉर्म को साथ ही साथ बिल्ड करें और उसको जो है वो अवेयरनेस और एक्विजिशन का एक जो ना पर्पसेस के लिए आप समझें. अच्छा इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था बिकॉज मेरा टेक बैकग्राउंड है और वो है वही वाली बात आती है कि हमारे यहाँ फोकस होता है बॉटम लाइन इन नेट प्रॉफिट्स जिसकी वजह से हम एग्रीगेटर को एग्रीगेटर के तौर पे यूज नहीं कर पाते. ग्लोबल जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे वर्क ऑन जीएमवी मार्केट शेयर. सो एग्रीगेटर इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज यूज्ड फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी दे आर यूज्ड फॉर द मार्केट शेयर. वंस यू हैव द मार्केट शेयर आप ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करते हैं बिकॉज आप एक सर्टेन मार्केट शेयर होल्ड कर रहे होते हैं और सस्टेन कर रहे होते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ब्रांड्स ग्रो इसलिए नहीं करते कि वो ये रिस्क ही नहीं लेते कि पहले हम मिनिमम मार्जिन पे अपना मार्केट शेयर क्रिएट करें. लेट्स से कि कोई कौन सा पाकिस्तानी ब्रांड आपके जहन में आता है तो किसी भी एक सेक्टर में फॉर एग्जांपल पिज्जा में बर्गर में जो लोकल ब्रांड हो लेकिन उसका मार्केट शेयर उस रीजन के अंदर 50% से प्लस हो. सारे ग्लोबल ब्रांड्स में नहीं. उसका रीजन ये है कि वो पहले काम करते हैं मार्केट शेयर पे. वंस मार्केट शेयर मेंटेन होता है तो फिर एडिशनल प्रोडक्ट्स लाते हैं इनोवेशन लाते हैं और फिर उधर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करते हैं. थोड़ा सा ये I think I would also agree to it because initially when we started off Melbrew, coffee हमारा as a product is an expensive product to import of course क्योंकि हमारे roasting Melbourne से ही होकर आती है. But just to add in a few things, one thing that we did initially plan out was that our main focus was volumes and taking over the market. And that is still our goal and that is still our intentions. Food Panda and other third-party applications. We did try our own logistics by the way, which was a terrible disaster and a failure. So we do use Food Panda and yes, their exposure is high. Capturing the market share initially, focusing more towards volumes rather than net profits, I think is the way forward for any brand which wants to export on a national or a global level. I also. मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री और हम में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इन होना चाहते हैं और बट द रियलिटी इज आल्सो दैट मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि 80% रेस्टोरेंट जो है पहले 5 साल में क्लोज हो जाते हैं. तो आप उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और एक तो ये कि हम इसको एक जनरल बिजनेस के तौर पर लेते हैं. एक ये है कि हम इसको एज अ स्टार्टअप लेके चलें इसका प्रॉपर प्लान हो और प्रॉपर वे में जिस तरीके से हम स्टार्टअप में समझते हैं कि किस तरीके से इसकी एक फाइनेंशियल प्लान बने किस तरीके का मार्केटिंग प्लान बने. तो आप यंगस्टर्स को जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनको क्या सजेशन देंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि कम से कम रिस्क तो हर चीज़ में होता है लेकिन किन चीज़ों को मेन नज़र में रखें जिससे जो है रिस्क मिनिमम हो सके. आप लोग सब अपने एरियाज में जो भी सजेशन करना चाहते हैं. पहले तो ये 80% का डेटा सुन के ना लोग घबरा जाएंगे तो मैं कहूँ घबराना नहीं है सबसे बेस्ट. सो इसलिए दिस इज प्रॉब्ली डिफरेंट सेक्टर्स का इसी तरह ही होगा. तो इट इज़ अ वेरी फन बिजनेस. मैं जब फूड बिजनेस सेलिंग पे आता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अर्ली स्टेज पे जब हम वेस्टर्न मार्केट्स को देखते हैं तो वहाँ पे
लोग स्टूडेंट लाइफ में ना अमूमन मैकडॉनल्ड्स, केएफसी इस तरह की चेन्स पे काम कर रहे थे. So they get so much exposure to this work environment, corporate hierarchies, कैसे काम करना है. तो वो डे वन पे जाएंगे तो उनको जो है ना वो मॉप लगवाएंगे, स्टॉक इन्वेंट्री काउंट करवाएंगे, रखेंगे. It is part of their learning culture. That's why their professionalism is higher than ours. ये हमारे वर्क एनवायरनमेंट में तो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला. So hence it's very important for this should grow in our market. हमारे पास ये I remember in my early days जब हम स्कूलिंग में थे तो TGI Fridays आया था और वो TGI Fridays उस वक्त का जो पेरोल था वो 2000 रुपए था या 1700 रुपए था. If I remember, this was the minimum wage at that time. TGI Fridays was hiring A-level students at 8,000 rupees for working for 8 hours or 6 hours. So उसमें उनको बहुत सारा अच्छा टैलेंट मिला था and they trained them really well. And those talents then moved on at higher level या वो international markets में चले गए. Currently, one of our industry colleagues, Raza Peer Bhai, is the CEO of KFC. He was hired as a restaurant trainee crew member at Pizza Hut, which then moved on and now at a very senior management position and a very recognized position क्योंकि उन्होंने इस ब्रांड का टर्नअराउंड किया है. It's very rare. तो important ये है कि this business is for people with passion. अगर आपका passion है, you will do really well. First thing. So don't run after money. Work for your passion. इस फायदा ये है कि ये cash flow positive business है. मतलब आप you're running on the cash flows, which is a very good side. Secondly, barrier to entries कम है than other businesses. Everybody's experiencing food, cooking food in their life, so easy to enter. So that is where now अगर आप उसको जिस तरह टेक स्टार्टअप्स आते हैं, प्रोडक्ट बिल्डिंग करते हैं एंड प्रोडक्ट माइंडसेट के साथ आते हैं, सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ आते हैं, so that is how you have to enter. If you enter into it with a professional mindset, inshallah you will grow. The risk factors you will learn fast and then you will move on. जो लोग इसमें आते हैं बहुत ही सिर्फ अपने आइडिया बेस पर और मार्केट रिसर्च को, मार्केट को नहीं समझते, चैलेंजेस को नहीं समझते, वो फेल करते हैं, which would probably be true for any sector. मेरा रेस्टोरेंट नहीं है तो आई एम नॉट बी द राइट पर्सन, बट आई थिंक बहुत ही अच्छा समराइज किया समद भाई ने. The fundamentals remain the same. Understanding your target market, having a unique selling proposition, building a very strong investment and a P&L plan. And I think it's very critical to have mentors from the restaurant industry itself to validate and vet your P&L and investment plan. Because one of the very few industries जहाँ पर बहुत ज़्यादा helpful भी है, which is a restaurant industry. So everyone will help each other in order to make the other restaurant successful. So I think it's very important to have the right mentor in order to build a successful restaurant plan. I'd also add in slightly, which is one thing that we did learn was initially I did not know a lot about coffee, so we had to learn thoroughly of what it was. Understanding the product is very important. So first, I think you should build your product, understand it thoroughly, learn it, and then love it. Loving your product is also very important, your brand. And another thing for the youngsters especially is do not invest money, invest your time. पैसा आ जाता है, पैसा इन्वेस्ट करा जा सकता है. So invest more time than you invest money, and I think it is like the key to success for any business that you start. अच्छा, since I'm a very new entrant to the industry, but जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ब्रांड पहले 5 साल में ही खत्म हो जाते हैं, तो हमने वो 40 साल पुराना वाला ब्रांड इसीलिए लिया है कि हम उसको खत्म नहीं होने देना चाहते. हम समझते हैं कि इनोवेशन नहीं है और ओरिजिनलिटी नहीं है. हमारी फिलॉसफी में ये है कि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट को सर्व करें और प्रोडक्ट ऐसी बनाएं जो कि ग्लोबल मार्केट के सर्व करने के काबिल हो.
पहले उसका सिस्टम काबिल हो कि वो सर्व करने के काबिल बनाए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट भी ओरिजिनल हो। तो सारा गेम वहीं आ जाता है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस आप देखते हैं कि जो पहले 5 साल 2 साल के अंदर डाई कर जाती है, उसका रीजन ये कि दे डोंट कम अप विद अ प्लान। आपका विजन भी नहीं होता, प्लान भी नहीं होता और उसका सस्टेनेबल मॉडल भी नहीं होता। और फिर इतने हाई होप्स होती हैं कि जो जब वो नहीं पूरी होती तो उसके बाद आप उस आइडिया को लूज कर जाते हैं और वो आइडिया डाई कर जाता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लान वाइजली एंड हैव अ विजन और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ब्रांड को बिल्ड किया जाए और ग्लोबल प्रैक्टिसेस को बिल्ड किया जाए। I hardly see any brand from Pakistan having ISO certifications। क्यों नहीं है? Why not? जो बड़े ब्रांड हैं, जो 25-25, 40-40 साल पुराने हैं, उनके पास भी नहीं है। क्या रीजन है? क्योंकि हम सिस्टम्स पे बिलीव ही नहीं करते, हम उन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू को समझते ही नहीं। जब हमारे पास वो सर्टिफिकेशंस होंगी तो ऑटोमेटिकली हमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करेंगी। ऐसा ही होता है ना, बाकी इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है। तो हम जब उस लेवल का सोचना शुरू करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएंगी, वो उसको फिर हम अवेल भी करना चाहेंगे और हमें अपॉर्चुनिटीज लाइक पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया को लिए हमें सोचना चाहिए ग्लोबल। हम बहुत लोकल और अपनी अपनी टेरिटरीज में फंस गए हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपैंड नहीं कर पा रहे और ग्रो नहीं कर पा रहे। थैंक यू वेरी मच। With this we will conclude our session. Thank you very much. Thank you for the guests. Thank you so much for coming, everyone. Great panel, great insights. बहुत सारे और रेस्टोरेंट के ओनर्स भी आए हैं यहाँ पे और अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इवेंट। आई थिंक इसके बाद हमें चाय भी रखी है। So now I'd like कि Azam I was a bit late, but Azam uncle is like my taya. He's like an older brother of my dad, and I want कि आप भी अगर 1-2 मिनट प्लीज हमें कुछ enlighten करें, and then we just have a few more talks and then we're done. And then go to the बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच साहब, ये अच्छी बातें हो चुकी है और अच्छे पैनल डिस्कशन के बाद मैं सिर्फ एक पुरानी रवायत है कि जब कोई बंदा इवेंट करवा रहा होता है तो खुद इनवाइट करने जाते हैं दोस्तों को। आई एम हियर कि आपको इनवाइट करूं फ्यूचर फेस्ट के लिए, और आई एम ए प्राउड फादर कि मैं ये भी हर जगह जरूर बताता हूँ कि मेरा बेटा जो 26 साल का है, उसका ये विजन है कि पाकिस्तान में स्कूल डिजिटली इनेबल करना है स्कूल को, और वो पूरी दुनिया से अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। तो चाहूँगा कि आप लोग फिजिकली वहाँ तशरीफ लाए हैं, जो फिजिकली नहीं आ सकते वही बैठ के वर्चुअली भी अपना रोल अदा कर सकते हैं कि इस मुल्क में हम बाहर से लेके आए डॉलर्स और अपने नौजवानों पे ट्रस्ट करें। और चूंकि मेरे बेटे ने मुझे ये विजन दिया कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं, तो सबसे दरख्वास्त करता हूँ हमेशा इकबाल का ये पैगाम लेके कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बहुत शुक्रिया, आपसे मुखातब होना मेरे लिए आज़ाद है और फ्यूचर फेस्ट में आप सबकी सपोर्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा एक बड़ा लाइव दिया। Now I'd like Umair bhai comes up, so he is now one of the largest digital marketing company CEO हैं उनके, और he wanted कि किस तरह हम लोग collaborate कर सकते हैं, किस तरह हम लोग grow कर सकते हैं, उस पर कुछ बात करें। Thank you so much for coming. The awards are mine especially है। Assalamualaikum. My name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hypemetrics. Hypemetrics is one of the largest technical and marketing company in Pakistan right now. We have won multiple awards. Myself, I won E-commerce Leader of the Year award. I have recently won E-commerce Strategic Advisor, and the award was given to me by Honorable Governor of Punjab, Baligur Rahman साहब। हमारे पास जो हमने 2022 में भी एक अवार्ड जीता था, that was the fastest retail online company in Pakistan। हम जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, I'm working with everyone in the footwear and your Borjan, Neza, Kanchilagari, Mochani, ECS, Metro Shoes, NM Mall, Al Fateh, Kesaria, Leisure Craft, Shinair, Mini Miners, Nishat, So Kamal, ये सारे हमारे clients हैं 81 clients में से। So अगर हम Future Fest की बात करें, I'm associated with Future Fest with Azam साहब and his proudly son Aziz Azam के साथ मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, and I am also a curator and I host a podcast series which goes by Newcomers by Future Fest। उसमें काफी तकरीबन 50+ पॉडकास्ट में कर चुका हूँ लास्ट 2 महीनों के अंदर। स्टार्टअप की बात हो रही है, तो अभी जो जर्नी मैंने आपको बताई एंड यू नो इट कंटिन्यूज। वी स्टार्टेड इन 2019 और उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया था तो कम मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स बैठे थे
और हमारा जो पाकिस्तान का जो कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स करता है इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग एंड टेकिंग डिसीजंस ऑन द मेरिट. अगर हम बात करें स्टार्टअप में, जो स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज वो जो ई कॉमर्स में एवरीबडी थिंक दे कैन एंटर इनटू द e-commerce and online and they can start it and it will be very feasible for them, but it doesn't work this way. अगर हम क्योंकि टाइम कम है, अगर हम एक चीज को पकड़ ले कि जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप में प्रॉब्लम करता है वो करती है मार्केटिंग कॉस्ट, बिकॉज इट्स the war is between the business and the social media like Facebook or Instagram, because the algorithm which they have made, you cannot win against that. But yes, अगर हम इसमें कंटेंट की बात करें तो what is content? Content is a way to communicate with the end user, so that if you focus on the product, if you focus on the content and user generated content आप बनाते हैं या कोई भी ऐसा content जिसमें thought process हो, so that is how you will be able to achieve good reach and impression, and the algorithm judges it, which everyone knows this कि अगर आप अच्छा content बनाते हैं तो आपको एक organically reach भी मिलती है, और जिसकी basis के बाद if you will push it and paid marketing, you will be getting good results. इसके अलावा स्टार्टअप के लिए जो है ना 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ कि पैशन. अभी आगे यहाँ कोई हमारे दोस्त बैठे थे जो उन्होंने बात की, बेसिकली पैशन. You need to find out what is your passion, and once you find out your passion, then that is the only way. जब आप ये डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है. अनफॉर्चुनेटली हम ये करते हैं कि अर्जिश ने फ्यूचर फेस्ट बनाया, इवेंट कराया, तो मैंने भी इवेंट करवा लिया. हम इस तरह करके फॉलो कर रहे होते हैं. दिस इज इट शुडंट बी लाइक दिस. मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया तो अर्जिश का ही आइडिया था. मैं अर्जिश के पास गया, मैंने कहा कि यार आप मेरा पॉडकास्ट करें, तो ही टोल्ड मी नहीं यार, आई थिंक कि आपको जो है अपनी पॉडकास्ट की सीरीज होस्ट करनी चाहिए. तो एक गेस्ट के साथ जब मैं पॉडकास्ट होस्ट कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि यार स्टार्टअप के लिए या किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए पैशन की जरूरत पड़ती है. तो आई आस्क इनके पैशन क्या है, कैसे पता चलेगा. तो उन्होंने बोला कि पैशन वो है जिसमें आपको भूख भी ना लगे, जिसमें आपको नींद भी नहीं आए, that sort of thing. तो मुझे रियलाइज हुआ कि माय पैशन इज स्पीकिंग, बिकॉज दैट डे जब उन्होंने मुझसे बात की, मैं उस दिन मैंने 13 पॉडकास्ट एक ही दिन में रिकॉर्ड किए थे. एंड सिर्फ मैं पूरा दिन पानी पी रहा था, या वो स्मोकिंग ठीक है, व्हिच वी शुडंट स्मोक, लेकिन ना मैंने पूरे दिन कुछ खाया ना कुछ पिया, और मतलब दिस इज हाउ आई फिगर आउट माय पैशन इज टू स्पीक फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. इट्स बीन आई हैव कंप्लीटेड 2 decades in the industry of client servicing, which I have served in UK, I have served in Dubai, I have served in France, I have served in USA and Pakistan. तो अगर आपको अपना पैशन पता चल जाता है, तो अगर आप वो काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली दी चांसेस ऑफ सक्सेस, एक बिजनेस को सक्सेस करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. सेकेंडली, यस, यू शुड सेट द बेंचमार्क, यू शुड सेट द गोल कि हमने अचीव क्या करना है. अगर आज मैं अपनी बात करूं, आप लिखिए बेस्ट मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान, यू राइट ई कॉमर्स एक्सपर्ट, यू राइट शॉपिफाई एक्सपर्ट, आपको मैं ऑर्गेनिकली मैं और मेरी कंपनी गूगल के फर्स्ट पेज पे मिलेगी. तो दैट वाज माय गोल कि मैं टॉप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइडर्स में टॉप 10 में हूं. तो आज मैं लाहौर में टॉप 3 में, पाकिस्तान में टॉप 5 में आता हूं. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच वी शुड फोकस ऑन, क्योंकि अगर आप गोल नहीं सेट करेंगे और पैसे ब्लीड करते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने रुकना कब है. तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड. आई थिंक आई थॉट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू सो मच. अच्छा, हम जो अभी बहुत बहुत खूबसूरत सी जगह में बैठे हैं, वो हैबिट सिटी है, और दिस इज ओन्ड बाय IBL. और IBL का एक बहुत ही एक्साइटिंग नई चीज शुरू होने जा रही है, एंड आई लाइक कि तला भाई इसके बारे में कुछ बताएं. तला भाई इज co-creating it with the whole team, and I'm really excited to learn more and more about it. I mean, मैंने उनसे बस पूछा कि अगर if you can share about it, because it's relatively very new, and I think we're going to be the first ones to learn about it. Thank you. So, on behalf of IBL Group and happy to welcome you guys who are from Karachi and outside Karachi as well. Quick background here, we are moving to the digital foray as well. So we're launching a venture studio called Goldcrest Ventures. So it's not going to be a venture capital, it's going to be a venture studio where we want to partner with startups, not just as an investor, but help them in their technology journey. I met a few other gentlemen from Silicon Valley as well. I'm based in the Bay Area, Silicon Valley as well. Quick background about myself, I've worked with, in Bay Area, I've worked with Google, Salesforce, Walmart Plus. In Pakistan, reporting to Singapore, I was working with Oracle. So the thought process behind when I was going back to Silicon Valley was, okay, how I can get that sort of knowledge base and experience and bring that back to Pakistan, right? And create sort of a bridge. So this is also the thought process behind our venture studio, and our thesis is
focused on right now on retail, distribution, logistics, and healthcare. These three industry verticals right now. So again, thank you everyone. It's really exciting seeing everyone. First time I met Ashish was in Silicon Valley last year for Startup Grind, and वहाँ से सारी discussion शुरू हुई. It's very heartening to see so much passion, so much stuff happening in Pakistan, and hope to see you guys again, and best of luck for it. Thank you. Thank you so much. And again, thank you so much for letting us host the event over here. It's a beautiful place and यहाँ पे सब कुछ grow ही होता रहता है.